In this video, I am giving information on important drug plant, the Durva grass, which is used in Ayurveda system of medicine, and it has been a part of Hindu rituals since Vedic times, and it is also fastest growing grass, making it popular and useful for the sports fields. I will give brief information about its morphological features, cultivation, and medicinal uses. This plant, Durva, is a grass plant found worldwide and belongs to the family Poaceae, means grass plant, grasses family, and it is also known as coast grass in Australia and New Zealand, and it has been introduced to the Americas, and it is also known as Bermunda grass. And contrary to its name, it is not native to the Bermunda, but in Bermunda it is known as crave grass, and other names of this grass as Doob in Hindi, Durva in Sanskrit, and others names, different languages of the India. And I will now give us brief taxonomical features. This plant is grass plant and have a distinct plant body. The upper part is known as the culm, and base is the root system, adventitious root. And the leaves of this plant is 2 to 15 centimeter long and linear shaped and little hairy and gray and green in color, and erect stem, means just commonly called call, 1 to 30 centimeter long, and slightly flattened. And where is the node of this? In the grass family, the node and internodes in the if you see the sugar cane. Juicy plants, these days, especially in the summer season, people mostly drink sugarcane juice. So you see the nodes and internodes, and between two nodes, the internode is present. But the same, because it is a grass family, sugarcane is also grass plant. Where nodes come in contact with soil, it regenerates, it perpetuates with, it brings out roots and form a dense mat. And easily, it is a very fast growing grass. And so it is recommended for the lawns and playgrounds. Then leaves, 2 to 15 centimeter long, and this fruit is the caryopsis, and it now cultivation, it can reproduce through the seeds, but seeds are very small, caryopsis in the grasses, and it is generally or fastly with the stolons or a rhizome underground parts. Means rhizome sustain or perpetuate in the deep, especially in the arid regions, and form the stolons like and at the joints they bring out roots and start the new plants, give new plants. And hundreds of cultivars have been created specifically for the environmental tolerance and stakeholder requirements, because this plant is very demanding, especially for the lawns purposes and sports grounds, and fastly regenerate. And the new cultivars are released yearly in this species, and this grass is usually this grass has religious importance and medicinal importance and other uses. First, I'll take the religious importance. This in Hinduism, it is considered an important plant in the worship of Lord Ganesha,
and Ganesh Puja, worship. And it is also dedicated in Durga Ashtami on the 8th day of the Shukla Paksha, especially. And it is known as Arugamphal in Tamil and Karuka in Malayalam, and is a part of Dashpushpam, means 10 sacred flowers in Kerala. It is one of them, Durva. And in Nepal is Hindu wedding, a garland made of this grass, any Durva, is worn by both bride and groom. Now, medicinal uses the rhizome, medicinally use rhizome, leaves, all plants are the medicinally important, but especially rhizome is very important part uh, because it is underground part and whitish in color, and the is, on the basis of the white color it is called the Swet Durba, and the rhizomes are reported to act as a diuretic in humans and can act as a astringent. And the plant used in the homa means fire sacrifice, home yagya jo generally perform in at the home. It is an important part, especially first because we start the worship from Ganesha, and the juice is given to ladies for the conception, means for the to start the pregnancy in woman, and it is useful, and it is recommended also in gout and rheumatism, the inflammation of the joints and muscles pains. It is very useful, and also for the good face and others, very useful plants. And in other uses it is a part of a fast growing, it is a very fast growing grass, and making it popular or useful for the sports fields, uh, because as when it is damaged it will recover very quickly, and it is also highly tolerable grass. The high and high tolerance, it has a high tolerance to the heat and drought, and enable to survive where other grasses do hardly. दूर्वा और दूब जो कि ज़मीन पर पसरती है, यानी कि फैल के चलती है ग्रास से, जैसे मैंने शंख पुष्प के पहले वाला वीडियो में आपको बताया था कि शंख पुष्प ज़मीन पर लेट के, इसी तरह से दूब भी आप देखते हैं कि मेट बना के, यानी कि पूरे धरती को पकड़ के चलती है, इसको बोलते हैं पसरना, प्रोस्ट्रेट रहती है। लेकिन इसके जहाँ पे भी दो नोड्स होते हैं, जहाँ पे भी जॉइंट्स होता है तने में इसका, तो वहीं पे से वो जड़ निकाल देता है और वहीं से पूरा दूसरी शाखा निकाल करके वहाँ नए पौधे का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से बहुत जल्दी से फैलती है, और ये हिंदू संस्कारों एवं कर्म कांडों में इसका उपयोग किया जाता है। शायद ही कोई इंसान होगा जो दूब के बारे में नहीं जानता होगा। हाँ, अलग बात यह है कि हर क्षेत्रों में तथा भाषाओं में इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में इसको दूब कहते हैं, संस्कृत में दुर्वा, और सहस्रवीर आनंद सतप्रभा नाम है इसके संस्कृत में, और मराठी में इसको पादरी दुर्वा कहते हैं, काली दुर्वा के नाम से भी। मारवाड़ी में इसको ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कोचग्रास कहते हैं, और बंगाली में इसको नील दुर्वा कहते हैं। इसी तरह से इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि तमिल में इसका नाम अलग है, वो करू का इसका नाम मलयालम में है। उसमें से एक दशम पुष्पम का एक मतलब वन ऑफ द 10 सेक्रेड फ्लावर जो केरला में माना जाता है, 10 पवित्र फूलों में से एक ये माना जाता है। तो वो भी पूजा में वहाँ पे यूज होता है। और इसके औषधीय गुणों के अनुसार धूप को जो है त्रिदोष को हरने वाली एक औषधि माना। जानते हो शरीर में, हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल। तो इनमें से किसी में तो जो दोष उत्पन्न होता है, यदि किसी में वायु विकार ज़्यादा हो जाए, मतलब एयर और वाटर, तो उसमें एक दोष आ गया, वायु दोष, मतलब बात। और किसी में जो है अग्नि, पित्त, अग्नि ज़्यादा अगर उसमें कोपित हो जाए तो उसको बोलते हैं पित्त पिता। और किसी में कफ, यानी कि वाटर और ये वायु अगर आकाश का प्रभाव होता है तो कफ आ जाता है। वो जनरली बच्चों में आपने देखा हो, उनका नाक में पानी बहता रहता है, तो ये कफ दोष।
तो इन तीनों में संतुलन बनाने के लिए ये जो है दूब का जो है ड्रग यानी दूब का पौधा बहुत ही लाभकारी है। और इसके अलावा जो है ये दुर्वा जो है तीव्र दोषों के अलावा जो है ये बात पित्त को तो करता ही है कंट्रोल, लेकिन अतिसार अर्श यानी कि पाइल्स में भी रक्त पित्त और पर्दर लिकोरिया जो वुमेंस में सफ़ेद पानी आता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका जूस बहुत ही उपयोगी है। गर्भस्राव और गर्भपात यानी एबॉर्शन इसीलिए वुमेंस के लिए दिया जाता है। किसी में गर्भ को ठहराना हो तो इसका जड़ का जूस जो है अगर उसको 2 चम्मच पानी के साथ लिया जाए एक कप में तो उसको दिया जाए तो गर्भ हो सकता है, मतलब शुरू हो सकता है। और जिन औरतों में मतलब ऐसी धारणा, कुछ औरतों में ये होता है बार बार गर्भ जो है गर्भपात हो जाता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसमें पीलिया में भी ये उपयोगी है, उदर रोग में उपयोगी है। और यह अपना जो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव जैसे कांतिवर्धक है, शरीर पे कांति लाना। यदि आप इसको कपालभाति के साथ इसका सेवन करेंगे तो शरीर में अच्छी शरीर में कांति आए, यानी आपको पेट अंदर बाहर करना होता है तो जितने भी विकार हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और खून शोधक भी है, रक्त स्तंभक जिसको बोलते हैं। और तो इस तरह से जो है श्वेत दुर्वा जिसको मैंने बताया कि राइजोम इसका अंदर रहता है, यानी कि जो हवा के टच में तो इसलिए वो थोड़ा वाइटिश हो जाता है तो उसको श्वेत दुर्वा का नाम दिया गया। और विशेषता ये बमन जैसे उल्टी कराने के लिए, कफ पित्त और अतिसार में उपयोगी है। और उसके अलावा जो हरी पत्तियों का तो जूस भी ले सकते हैं आप, कांतिवर्धक है। और ये जो है सेवन की दृष्टि से मैंने बता ही दिया कि एक कप पानी में 2 चम्मच इसका अगर दूर्वा का जड़ का पेस्ट लिया जाए तो वो पीने से इसको बहुत ही लाभकारी प्रभाव मिलते हैं। तो इसका जूस खासकर लेडीज़ के लिए जो है गर्भ ठहराने के लिए बहुत ही उपयोगी है ये प्लांट। और दूसरा ये लॉन में जैसे प्लेग्राउंड्स वगैरह, गोल्फ वगैरह मैदान में जैसे अमेरिका में, इसलिए पहले यहाँ पे नहीं था लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे उन्होंने पौधा ला कर वहाँ पे भी अमेरिका में ये उग रहा है। न्यूजीलैंड, वैसे तो पूरे समस्त संसार में दूब मिलता है लेकिन जैसे अमेरिका में नहीं था तो वहाँ भी उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। और कहीं भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में इसको लगाते हैं तो हरियाली आ जाती है एकदम से। आपने देखा है क्रिकेट के पहले उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा डस्ट होगी। तो इसलिए बहुत ही, क्योंकि इसके नोट से ही जड़ें निकलते हैं, वहीं से नए पौधा बन जाता है। तो ये जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। धन्यवाद जी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।